Weird. If you can see, this is what has broken. Dang. Welcome back to the channel. So today, here's the crew. Let me just focus on them. Tawhid, Irfan. So today the plan is to basically get the bike ceramic coated. हमें वैसे जाना तो था सैटरडे को, मगर सैटरडे को बारिश, प्लान बना नहीं कुछ. बट यू नो आज प्लान बना है और आज धूप भी अच्छी है. सो या प्लान आज का ये है कि यू नो first of all we want to get the bike ceramic coated. This is not ceramic coating but basically जो yearly maintenance है, this is the first yearly maintenance जो हमारी बाइक के लिए है. This is our RR and hopefully process में इतना time नहीं लगेगा. जब मैंने ceramic coating कराई थी तो it took almost a day, but you know let's hope आज इतना टाइम नहीं लगेगा. सो प्लान यही है कि बाइक को पहले सिरेमिक कोटेड कराएं. मेंटेनेंस जो भी यू नो इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में. आई विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू कि यू नो एक साल के बाद मेरी रिव्यूज़ क्या हैं सिरेमिक कोटिंग के लिए, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड यू नो we gotta give it a review. So that's it अभी के लिए. अभी हम all prepped and you know ready to depart, and I'll show you the bike as well. So yes, let's go. Yes. A little hitch. So पता नहीं कैसे जो मेरे indicators हैं, एक I guess राइट साइड का इंडिकेटर है या आई डोंट नो हाउ, मगर वो टूट गया था. एंड हमने थोड़ा जुगाड़ लगा के फेविक्विक से जोड़ा था, बट अगेन इट सीम्स लाइक इट्स नॉट. हमने सुखाना लास्ट टाइम सुखाया नहीं था. सो या वी वर लुकिंग फॉर फेविक्विक. आई थिंक मुझे ये इंडिकेटर वैसे चेंज करवाना पड़ेगा सून, बट फॉर नाउ वी जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट. फेविक्विक मिला नहीं है. लेट्स सी आगे जाके कहीं पे मिलता है तो. सो लास्ट टाइम I messed up, so you know this is a rookie mistake. हमने इस पे फेविक्विक लगाया and we didn't wait to you know dry it up, and what basically जब बाइक चली तो you know it ruined the fucking panel. Sorry. But right now we need to get it fixed. Maybe chipka ke, but I will get a new indicator. But right now, you know, we gotta fix this.
People, man, people. Hello people, so we are at detailing levels finally, with a minor hitch that we had. Here's our bike. It will take some more time, थोड़ा सा time लगेगा, for the coating. As you can see, detailing levels पे बहुत भीड़ रहती है, and भीड़ है तो wait करना पड़ेगा तो. So talking about the 1 year review of ceramic coating, it has been good. बाइक को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है ceramic coating ने for the past 1 year. मैंने ठीक 1 साल पहले फरवरी में कोटिंग करवाई थी, and all in all it has been a good experience. In terms of pricing, मैंने almost 15,000 रुपये दिए थे, and that was I think for a 5-year subscription. So first year आपका पूरा ceramic coating and all the process जो भी होता है वो पूरा जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो पूरा होता है, and then every year आपको एक maintenance मिलती है and then few washes that you can redeem. Overall it has been a very good experience, and मैं recommend करूँगा कि खासकर जिसके पास फेयरिंग वाली बाइक्स हैं वो ज़रूर ceramic coating करवाएं. Rest, it has been a good experience, and obviously detailing levels has done a good job even when we did the coating for the first time, and now that you are seeing that
ये जितने भी मेंटेनेंस के टास्क हो रहे हैं. So yeah, overall very good. So finally, the bike is ready. It took almost a whole afternoon, but ready a bike, and it's looking stunning. Detailing levels. So finally a long day अब ख़त्म हुआ. आज का दिन अच्छा था. I'm very happy with the work done on the bike. It looks, brand spanking new. जो कि detailing levels पे you always get, they have the word detailing in their name, and that is what they do. Like, it's so good. जो भी I guess imperfections हैं बाइक में over last 1 year, that are because of unfortunately जो मेरी negligence है पूरे साल की. I mean, बाइक वॉश होती है मगर it's डिटेलिंग लेवल्स पे मैं आके वॉश नहीं कर पाता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है घर से ना. सो काफ़ी भीड़ हो रही है आज. Good weather, by the way. So yeah, देहरादून का ट्रैफिक आप देखिए. देहरादून की गलियों का ट्रैफिक. आप नहीं पहले मैगी और व्हाट
Hello people. So I think the day is now ending. We are having some dinner, as you can see. Hi bolo, Londo. So the day is pretty much ending, and the video, I hope you like it. Ceramic coating अच्छे से हुई. I'm very happy with the ceramic coating, and hope next time I'll try to take care of the bike more. अभी तो कुछ चीज़ें हैं उसमें जो सही और I think करवानी है मुझे. बाकी I think that's it for the day, and hopefully next week we bring you something else. कुछ और प्लान बनाते हैं, and till then hope everybody is staying safe. Also please like, follow, share, just the normal चीज़ें होती हैं, and also follow me on Instagram if you want the latest updates. That's it for today. Peace till next time.